Good evening, everyone. I hope I'm audible and visible. So, today we are going to discuss speaking part 3. So, guys, I had a session on speaking part 1 and then on speaking part 2, wherein I explained how we should answer for speaking part 1, what we need to keep in mind, how we can add in idioms and phrases for that. And for speaking part 2 also, I discussed how to prepare for the cue card and how to cover up our 2 minutes time, how to give a brief about the topic and then start speaking, and how to keep speaking continuously for around 2 minutes. Yeah. And today we are going to have this session on speaking part 3, wherein I'm going to explain how we should answer for speaking part 2, how which type of questions are asked and how many sentences should be spoken, right? How to start the answer, how to use different phrases while answering. So we are going to discuss all these things in today's session. Yeah. Good evening, everyone. Can you please let me know if I'm audible and visible? So, guys, this course on this is IELTS Excellent Batch course, which is starting from 27th of October, wherein writing, reading, grammar, and speaking, these modules are going to be covered. Writing will be taken by Griti ma'am, reading by Sonia ma'am, speaking by Garima ma'am, and grammar will be taught by Sonam ma'am. Okay. And my course on speaking is currently going on, which I started yesterday only. And today we discussed cue card strategy. In the next, so there are 3 more sessions wherein I'll be discussing speaking part 3 in detail. Your live speaking session will also be held, and idioms and phrases will be discussed in the course. Okay, collocations, idioms, phrases, vocabulary, task specific vocabulary which we should use. And my course on grammar will be started in the first week of November. So those who are interested, they should join Unacademy. They should use this code Shama Aurora 10 to get 10% off on the subscription charges. Okay, right? There are many students who struggle with the writing part. They do not know how to understand the question, what ideas we are supposed to write, what vocabulary we need to use in that, how we are supposed to use collocations, right? So everything in the course is going to be discussed, and your writing will also be evaluated in the course. Yeah. So use this code Shamarora10 and get 10% off on the Plus subscription and get the benefits of attending classes at Unacademy, wherein we are 10 educators. So these are the top 10 educators, okay, who are taking classes at Unacademy. You may listen to the sessions of any of the educators. You may attend their live sessions. You may listen to the recordings also anytime. Yeah. This is undoubtedly the best platform for IELTS preparation, because 20 plus courses every month are being published. General and academic training is being provided. Your speaking sessions are being conducted. Writing evaluation sessions are being conducted. So undoubtedly this is the best platform wherein you need not pay much for the sessions, right? Okay. So let's discuss speaking part 3 now. So in part 3 of the speaking test, the examiner will ask further questions which are connected to the topics discussed in part 2. It's a two-way discussion with the examiner and will last for 4 to 5 minutes. So overall this speaking part 3 is for 4 to 5 minutes. Okay. Wherein, like, how this part is different from part 1. In the speaking part 1, the questions are asked related to you, right? Your likings and dislikings are generally asked in that part. Okay. And the questions are about you. It's more about you. It's about your introduction. It's about your likings, your interest, your hobbies, your dislikings, right? Whereas the questions in speaking part 3 are abstract questions. Okay. They are more about the world around you. They are not about you. They are about the world around you, right?
So here the questions will not be asked like what's your favorite weather, right? This type of questions will not be asked in speaking part 3. The questions will be based on your opinion, and I would say this part is very much similar to essay writing. How? Let me tell you. When you will be able to relate it, you will be able to answer the questions well. So essay writing में usually what happens, your opinion is asked, है ना? बहुत सारे questions होते हैं wherein your opinion is asked. Say for example, what is your opinion? Straight away a question is asked, what is your opinion, right? Or do you agree or disagree? Do you agree or disagree? Or is this a positive or negative development? Is this a positive or negative development? Or what are the causes and suggest some solutions, है ना? यही वाले questions होते हैं in speaking part 3 also. These type of questions are generally asked, right? The questions which are based on your opinion, right? They give a statement then ask you to give your opinion on the statement, है ना? They sometimes ask, do you agree or disagree with this? Okay. Sometimes they give direct questions to us. We have direct essay structure also, है ना? Writing में, IELTS की writing में. So this part, speaking part 3 is very much similar to essay writing. इसी तरह के questions are generally asked, ठीक है? And in the essay writing, what we always do, we give a point, that point is reasoned properly, है ना? हम उसका एक reason देते हैं and we try adding examples related to them. Yeah. Similarly, in IELTS speaking part 3, you are supposed to give the points. Those points should be reasoned and you should add examples related to them. Though not in all the questions, right? We should try adding examples. Of course, सारे questions में example नहीं देना आपको, right? Speaking part 3 में around I would say 6 to 8 questions are asked, sometimes more than that, but usually between 6 and 8. Yeah. And the very first question which is asked, that's the easiest one. Difficulty level of these questions keeps increasing. पहले वाला question would be very easy, second question उससे थोड़ा tough होगा, third उससे tough, right? So this way the questions are asked in speaking part 3. तो जो very first question होगा उसमें generally question statement भी बहुत small होती है, right? And you can answer in 2 to 3 sentences for that. But sorry guys, excuse me. Yeah, लेकिन उसके बाद जो questions होते हैं ना, generally we should try adding 4 to 5 sentences. And सिर्फ ये चीज़ नहीं ध्यान रखना कि 4 to 5 sentences, there are so many other things we need to keep in mind. वो क्या? एक तो यही चीज़ जो मैंने ऑलरेडी बताई, अ पॉइंट शुड बी गिवन, दैट पॉइंट शुड बी रीजन, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स ऐड करने की कोशिश किया करो. एंड उसके अलावा यू शुड ट्राई मेकिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, मतलब सारे के सारे सेंटेंसेस शुड नॉट बी सिंपल, है ना? यू शुड ट्राई मेकिंग कॉम्प्लेक्स, कंडीशनल, कंपाउंड सेंटेंसेस. समटाइम्स यू शुड ट्राई यूजिंग रिलेटिव क्लॉजेस. यस. और जो भी आप एग्जाम्पल्स देते हो गाइस, जैसे वी ऑलवेज से इन आईएल्स राइटिंग, वी आर सपोज टू यूज एग्जाम्पल्स जो पर्सनल एग्जाम्पल्स नहीं है. वी कांट टॉक अबाउट आर सेल्फ, वी कांट टॉक अबाउट आर लोकेलिटी, वी कांट टॉक अबाउट आर फैमिली. वी शुडंट गिव पर्सनल एग्जाम्पल्स, है ना? सिमिलरली इन आईएल्स स्पीकिंग पार्ट 3 जो भी आप आंसर्स देते हो ना, यू शुड नॉट गिव योर एग्जाम्पल्स, राइट? अपना एग्जाम्पल नहीं देना. इट शुड बी universal example, right? Maybe you can give an example from a newspaper, from a survey. You can talk about any city of the world, right? Renowned city of the world जिसके बारे में सबको पता है. तो इन examples जो हम देते हैं, they should be universal examples. I'll show you some samples further how the answer should be given, right? There are many phrases जो हम use कर सकते हैं. वो क्या? जैसे जब आप अपना opinion देते हो, right? तो opinion देने के लिए हम usually क्या use करते हैं? I believe, I think, है ना? In my opinion, from my perspective. So try using these different phrases in the beginning of the sentences, in the beginning of the answers, and try avoiding repetition. अब repetition में क्या होता है? Most of the students they keep answering in yes no only, right? हर question का आंसर yes no से शुरू हो जाता है, या well से शुरू हो जाता है, या फिर definitely से शुरू हो जाता है, right? Repetition of course should not be done. ये सारी चीजें गाइज प्लीज कीप मेकिंग नोट्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स, राइट? व्हाट आई हैव सेड कि IELTS स्पीकिंग पार्ट 3 इज वेरी मच सिमिलर टू essay राइटिंग,
वेरिन जिस तरीके से हम ऐसे राइटिंग में आंसर देते हैं वैसे वी आर सपोज टू आंसर हियर, उस पॉइंट का रीजन दो एंड उसका एग्जाम्पल दो. अब कई बार ऐसा होता है कि रीजन एंड एग्जाम्पल ऑल टुगेदर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सपोज उन्होंने आपसे पूछा व्हाट आर द एडवांटेजेस, ठीक है. अब suppose they have asked what are the advantages of using computers, the advantages and disadvantages of using mobile phones, ठीक है. अब अगर हम पहले एक पॉइंट देंगे, एक एडवांटेज देंगे, फिर हम उसको प्रॉपरली रीजन दे रहे हैं, उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, फिर हम दूसरा पॉइंट दे रहे हैं, फिर उसका रीजन है, उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, फिर वी आर टॉकिंग अबाउट डिसएडवांटेजेस, तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा. वी शुडंट give very lengthy answers. 4 to 5 sentences would be sufficient to answer for in the speaking part 3. इससे ज़्यादा आंसर नहीं देना है ना. वो डिपेंड करते हैं कि किस क्वेश्चन में हम पॉइंट, रीजन एंड एग्जाम्पल दे सकते हैं. अब इफ इट्स अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ समथिंग, तो ये बहुत लेंथी आंसर हो जाएगा. अगर आप पहले एक पॉइंट देते हो, फिर उसका रीजन देते हो, फिर एग्जाम्पल देते हो, फिर दूसरा पॉइंट देते हो, फिर उसका रीजन देते हो, फिर एग्जाम्पल देते हो, देन यू कम ऑन टू डिसएडवांटेजेस एंड यू डू द सेम थिंग फॉर दैट ऑल्सो. गेटिंग? सो दिस ऑफ कोर्स शुड नॉट बी डन. इतना लेंथी आंसर हम नहीं दे सकते. तो उसके लिए इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मोबाइल फोन्स, या कोई और चीज़ का एडवांटेज डिसएडवांटेज दे आस्क, तो उस केस में आपको क्या बताना है, पॉइंट्स देने. उस केस में रीजंस एंड एग्जाम्पल्स ऑफ कोर्स वी कांट गिव. I hope everybody is getting this point. Keep letting me know please guys, keep letting me know कि point, reason, example देना है, but that is not a possibility for each and every answer, because we have to keep in mind that we should answer in 4 to 5 sentences only. We can't make it like a cue card, है ना. cue card में तो क्या होता है, in the cue card we are supposed to speak for 2 minutes time, but of course for these questions we can't speak for 2 minutes time, right? Yes Ram, yes Umar, yes Isha. I hope everybody is getting, yeah. ओके अब ये वाली फ्रेजेस प्लीज गाइस इनके नोट्स बना लेना, अभी के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो. जब आपको अपना ओपिनियन देना है, आपको अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, तो किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है. सी, इन माई ओपिनियन, एज फार एज आई एम कंसर्न, इट सीम्स टू मी दैट, वेल आई वुड से, आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट द वे आई लुक इट एज, आई थिंक, आई बिलीव दैट, आई थिंक मोस्ट पीपल वुड अग्री दैट, I believe it's hard to deny that, or I strongly believe that. So जब आपको अपना ओपिनियन देना है, तो there are many ways out कि आप अपना सेंटेंस का, जो आप अपना आंसर दे रहे हो, उसको स्टार्ट कर पाओ, है ना. तो do not always start with yes, definitely, right, or absolutely, yeah. बहुत सारे वेज आउट होते हैं, डिपेंड करता है which question has been asked, isn't it? Yes Umar, I reckon that, yeah. क्वेश्चन क्या पूछा गया उसके बेसिस पे ऑफ कोर्स डिपेंड करता है, राइट. अगर ओपिनियनेटेड क्वेश्चन है तो ऑफ कोर्स यू शुड स्टार्ट लाइक दिस, इन माय ओपिनियन, एज फार एज आई एम कंसर्न. सो आई होप यू ऑल हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड गाइज, एंड इनको एक बार पढ़ लेना, गो थ्रू कर लेना, लर्न दीज फ्रेजेस, एंड जब भी आपके पास ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो ट्राई यूजिंग डिफरेंट वंस, या ऐसे नहीं कि हर बार यू आर स्टार्टिंग विद इन माई ओपिनियन, राइट. ओके, व्हाट आई एक्चुअली मेंट वाज टू एक्सप्रेस इट अनदर वे. जब हम कोई पॉइंट हमने दे दिया, अब उस पॉइंट को फर्दर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हाउ द एक्सप्लेनेशन फर्दर कैन बी डन. व्हाट आई एक्चुअली मेंट वाज टू एक्सप्रेस इट अनदर वे टू से इट इज, अनदर वे ऑफ सेइंग इट इज, लेट मी पुट इट अनदर वे, और लेट मी पुट इट दिस वे. व्हाट आई मीन इज, राइट, व्हेन वी एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, जो हमने ऑलरेडी पॉइंट बोल दिया, when we have to explain that statement, तो उसके लिए we can use these phrases. What I want to say is, what I'm trying to say is, okay. Then when you give an explanation further, उसके अलावा further जब हमें कोई explanation देना है, तो well the reason is, well the thing is, what I mean is, the reason for this is, agreeing with an opinion. If they ask you the question, like if they give you a statement, then ask you, do you agree or disagree with this? So I see, if you agree with the statement, I see eye to eye with this. Eye to eye is a phrase which is used for agreeing. I completely agree, है ना. So I see eye to eye with this. I completely agree that, yes indeed, I entirely agree with you on that. Entirely agree मतलब completely agree, right? That's exactly how I see it. अगर आप ऐसे भी बोलते हो तो भी तो यही हुआ कि आप अपनी ओपिनियन में you are saying you agree with the statement, isn't it? So that's exactly how I see it. That's exactly what I believe.
Certainly, definitely, yes, that's obvious. So when you agree with the statement, any of these terms can be used. Okay, disagreeing with an opinion, I possess a different view, I see it otherwise, I see it otherwise, है ना, मैं उसको दूसरे तरीके से देखता हूँ. This might be true in some context, कुछ cases में true हो सकते हैं whatever is said by you, but not always. And then further you have to define it why, right? I oppose the view that, I disagree, well it depends, yes, but there is also another aspect to consider, right? So these are different phrases which can be used in case the question is disagree. Matlab question is disagree, matlab your opinion is in disagree, right? Okay, buying some time, sometimes it happens that we need to buy some time, है ना, we are not able to answer instantly, spontaneous answer अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो that's an interesting question. I have never really thought about it, but I don't know much about it, but still I would like to say something, I would like to tell. Well, not sure where should I start, or that's a difficult question to answer. अब ये चीज़ बहुत केयरफुली ध्यान रखना, देयर आर सम स्टूडेंट्स who always say that's an interesting question. पहली चीज़ तो this can be used for one question only in part 3, है ना, एक ही क्वेश्चन के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, that's an interesting question, है ना. Another thing, you must have some ideas for the question, है ना, ऐसे नहीं कि you are just buying some time, that's why you have used it and further you are unable to answer the question, you are finding it difficult. अब अगर आपने ये वाला phrase यूज किया, you're already saying it's an interesting question to answer, so how come you're not getting ideas, तो वो तो contradiction हो जाएगा, isn't it? So बहुत carefully we are supposed to use these phrases. I hope everybody is getting, है ना. So if you are saying that's an interesting question, this definitely should be interesting one for you, है ना. Of course you should answer well that particular question, right? Difficult question तभी बोल सकते हो जब सच में आपको difficult लग रहा है, you are unable to find out some words for that, है ना. So that's a difficult question to answer, right? Yes. Okay. Introducing other ideas. On the other hand, on the contrary, from a different perspective, from a different viewpoint. अब यहाँ पर let me just give you an example, but most of the students do. Suppose the question is, जैसे अभी मैंने discuss किया, discuss the advantages and disadvantages of using public transportation. ठीक है, या फिर let's talk about private transportation. Discuss the advantages and disadvantages of using private cars. ठीक है. अब यू आर टॉकिंग अबाउट द एडवांटेज, आपने एक एडवांटेज पहले बता दिया प्राइवेट कार्स का, देन यू हैव गिवन द सेकेंड एडवांटेज, ठीक है. उसके बाद नाउ यू वांट टू टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस. अब डिसएडवांटेजेस के बारे में आप बताना शुरू करोगे तो कैन यू स्टार्टेड विद इन एडिशन, that is not a possibility guys. Why? Because you are coming on to the other viewpoint now. दो viewpoint है, एक viewpoint तो है कि उसके फायदे क्या है, दूसरा है उसके नुकसान क्या है. तो other side बताना है आपको, flip side बताना है. तो जब आपको other side बताना है, flip side बताना है, how is this a possibility कि हम in addition use करें? That is a very wrong usage of the connecting word. ठीक है, तो वहां पर आप क्या यूज कर सकते हो, however लगा सकते हो, या on the other hand लगा सकते हो, या on the contrary लगा सकते हो, है ना. सो प्लीज बी केयरफुल कि कौन से कनेक्टिंग वर्ड्स का कहाँ यूज करना है. पार्ट 3 में ज्यादा डिफिकल्टी यही आती है बिकॉज दीज आर मोस्टली ओपिनियनेटेड क्वेश्चन, दीज आर मोस्टली द क्वेश्चंस एज वी गेट इन द एसे राइटिंग. सो बी वेरी केयरफुल कि व्हाट कनेक्टिंग वर्ड्स यू सपोज टू यूज, कौन से कनेक्टिंग वर्ड्स आप कहाँ यूज कर सकते हो, वो केयरफुली यूज किया करो. ओके, या सो टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आई ऑलरेडी डिस्कस मोस्टली कैसे होते हैं, जिसमें मैंने ऑलरेडी बताया, हो सकता है कंपेयर एंड कंट्रास्ट वाले क्वेश्चन हो, राइट. हो सकता है यू आर आस्क्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस जैसे वी आर आस्क्ड इन ऐसे राइटिंग. डू यू अग्री और डिसअग्री, अग्री डिसअग्री क्वेश्चंस हो सकते हैं, राइट. हिपोथेटिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं, मतलब हाउ वुड द सिचुएशन बी इन द फ्यूचर, राइट. व्हाट सॉर्ट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वुड बी यूज्ड मोर इन द फ्यूचर, राइट. अब ये हिपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसमें आपका इमेजिनेशन यूज होगा, राइट. सो हिपोथेटिकल क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. Yeah. All right. Explain why. Many students state their opinion but don't extend their answer by stating why they feel that way. Assume that the examiner has no knowledge at all about the topic. Yeah. So जो भी आप आंसर स्टेटमेंट देते हो उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करो, why are you saying this, उसका रीजन बताना बहुत जरूरी है. ठीक है. गिव एग्जाम्पल. A good technique is to use an example from a newspaper, article or recent study. जो मैंने आपको पहले भी बताया था
कि it's a good way out. Don't give personal examples. ठीक है? Okay, let's go through some of the samples. Is family important in your country? Well, people in my country believe that family comes first and they put their family ahead of anything else. They would do anything for the family, and I'm proud that family bonding in my country is quite strong. अब ध्यान देना यहाँ पर. Well, people in my country believe that. Why people in my country believe that? The question is family important in your country? So it's about your country, it's not a personal question. They are not saying is family important to you, isn't it? They are not asking is family important to you. ये नहीं पूछा गया. अगर आपसे पूछा जाता है is family important to you, तो of course you wouldn't have said this thing, people in my country believe that, isn't it guys? So ये question को बहुत carefully we should try understanding how the question has been asked, right? What helping verb is used, right? And what is being asked. Is it about me? जैसे मैंने already आपको बताया कि part 1 में mostly questions आपसे related होते हैं, whereas in part 3 the questions are about the world at large, okay? They are not related to you. तो ये question, ये example है, देखो is family important in your country? तो you don't have to start talking about yourself that my family plays a very important role for me. I like spending time, most of my time with my family, and they are always there through my thick and thins. No, that shouldn't be said here, because the question is not about you. The question is about the world, right? It's not about you. So is family important in your country? Well, people in my country believe that family comes first and they put their family ahead of anything else, right? They would do anything for the family, and I'm proud that family bonding in my country is quite strong. I hope it's clear. Yes guys, I hope everybody is getting. Okay, next question. How do you think the family will change in the future? Now this is opinionated question, isn't it? आपसे आपको opinion पूछा गया है. How do you think the family will change in the future? आपको कैसा लगता है future में किस तरह से होगी? तो it's about future, हमें ये भी ध्यान रखना है ना? It's about future, it's not about present. तो जब भी question is about future, we can compare it with present, है ना? Question अगर future के बारे में होता है, compare it with present, कि present में क्या situation है and future में किस तरह की होने के chances हैं, right? तो when you compare it with present, you will be able to use present tense, right? And when you will be talking about future, since the question is in future, so you'll have to use future tense जिसमें हम will लगा सकते हैं, right? So see how the answer is given here. And how do you think? I guess क्योंकि we are not very much sure about this, है ना? It's an imaginary question, it's a hypothetical question, future के बारे में है, right? So I guess more people will have, future tense, will have a nuclear family and the size of the family will be small in the future. People do not, अब present से compare कर दिया हमने, देखो कैसे. People do not like to have more than 2 children nowadays, and it seems this number will reduce to having 1 child in future. See how the comparison is drawn here, right? People do not like to have more than 2 children nowadays, and it seems that this number will reduce to having 1 child in future. The very norm that a man gets married to a woman and have their own children to form a family is being challenged by the concept of same-sex marriage, and this trend will increase in the future. So यहाँ भी we have written about present and then we have made a comparison with the future. So we have used the mixture of present and the future tense here, है ना? We have properly drawn a comparison and we have said what situation would be there in the future, right? Family को लेकर क्या situation होगी future में, right? And see, I guess, and यहाँ पर it seems this, it seems, ठीक है? Next question. Why is the number of joint families decreasing in modern time? Why is the number of joint families decreasing in modern time? In my opinion, the city life, which is highly competitive and busy, has diminished the concept of joint family and created the nuclear family. Besides, the urban influence, ever increasing inflation, our affection towards a materialistic life and less inclination towards the traditions and values have ended up making our own nuclear family. Sufficient answers we are supposed to give, है ना? Sufficient answers. हम बहुत छोटे answers नहीं दे सकते because we have to properly give the answer जो भी हमसे पूछा गया है. तो if the question is why is the number of joint families decreasing in modern time, क्यों decrease हो रहा है?
एक रीजन भी बता सकते हो क्योंकि यहाँ पर इज लिखा हुआ है, बट यू कैन टॉक अबाउट मोर देन वन रीजन ऑल्सो. तो अगर आपको मोर देन वन रीजन पता है, डेफिनेटली यू शुड डिस्क्राइब इट इन मोर देन वन रीजन, राइट. तो हमने क्या क्या रीजन बताया. अर्बन इन्फ्लुएंस तो है ही है, ever increasing inflation, our affection towards a materialistic life, and less inclination towards the traditions and values have ended up making our own nuclear family. And see how it has been started with, in my opinion, right. So I hope you all are getting how we are supposed to answer. बहुत केयरफुली ये ध्यान देना है कि अपने बारे में नहीं बताना, बिकॉज द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट यू हियर, इट्स अबाउट योर ओपिनियन. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन स्पीकिंग पार्ट 3 आर बेस्ड ऑन योर ओपिनियन. आपसे आपका ओपिनियन पूछा जाता है, तो उसमें यू डोंट हैव टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ. अपने बारे में बताना नहीं शुरू करना, ठीक है. लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन. ओके, is watching television a good way of forgetting about work or study? Absolutely yes. See how the answer is given, absolutely yes. These days there's so much choice available that we can completely immerse ourselves in entertainment. I mean you can turn on a good drama or comedy show and pretty soon you forget about everything that happened that day. I think that without television we would all go a little crazy. So see, absolutely yes, we have started with it. Then I mean, है ना, जो मैंने अभी आपको phrases दिखाई थी, and then I think, right. So try using different phrases from that जो मैंने आपको list दिया. I hope you all have taken the screenshots. Yes, so उसको पढ़ो एक बार, go through करो, and as per the questions you are supposed to answer. And I've already told क्या क्या चीज़ें you have to be careful about. One more thing, let me tell you, paraphrasing should be done. Paraphrasing, ठीक है. पैराफ्रेजिंग का मतलब, अब यहाँ पर कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इज वॉचिंग टेलीविजन अ गुड वे ऑफ फॉरगेटिंग अबाउट वर्क और स्टडी? यस, आई थिंक वॉचिंग टेलीविजन इज अ गुड वे ऑफ फॉरगेटिंग अबाउट वर्क और स्टडी. ऐसे नहीं करना. यू आर नॉट सपोज टू से एग्जैक्टली द सेम थिंग्स, है ना. पैराफ्रेजिंग तो आईएल्स में एवरीवेयर इट इज इंपॉर्टेंट. रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग सब में, राइट. स्पीकिंग में भी और गिवन अ बैंड स्कोर फॉर दैट अगर आप पैराफ्रेजिंग अच्छे से करते हो, ठीक है. yes 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 Umar, this can be used, definitely this can be used. yeah, so बार बार नहीं, रिपीट नहीं करना उमर, है ना, रिपीट नहीं करना. वी हैव अ लॉट ऑफ फ्रेजेस विद अस. तो मैंने जो आज आपको फ्रेजेस दी उनको गो थ्रू करो एंड ट्राई यूजिंग डिफरेंट फ्रेजेस एवरीवेयर, राइट. ट्राई टू नॉट रिपीट देम एंड ट्राई टू पैराफ्रेज विच आई टोल्ड. कि जैसे यहाँ पर है, इंस्टेड ऑफ आंसरिंग, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की ये हैबिट होती है ना, कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए इज वॉचिंग टेलीविजन अ गुड वे ऑफ फॉरगेटिंग अबाउट वर्क और स्टडी? येस, आई बिलीव वॉचिंग टेलीविजन इज अ गुड वे ऑफ फॉरगेटिंग अबाउट वर्क और स्टडी. अगर आप ये एज इट इज बोल रहे हो, यू आर कॉपिंग देयर वर्ड्स, है ना. पैराफ्रेजिंग इज इंपॉर्टेंट, कॉपी मत किया करो. ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की स्पीकिंग में मिस्टेक निकलती है. ऑलमोस्ट एवरीवन डज लाइक दिस, कि जैसे ही क्वेश्चन पूछा गया उसी फॉर्म में आप लोग आंसर देते हो उन्हीं वर्ड्स को यूज करके. तो यू आर कॉपिंग देयर वर्ड्स, राइट. एंड यू अंडरस्टैंड, राइटिंग में भी ऑलवेज से पता है आप लोगों को, ऐसे राइटिंग में कि पैराफ्रेजिंग करते हैं, हमें उनका कॉपी नहीं करना. सिमिलरली इन स्पीकिंग यू आर नॉट सपोज टू कॉपी द वर्ड्स, यू आर सपोज टू पैराफ्रेज, ठीक है. तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मैंने स्पीकिंग पार्ट 3 के लिए आपको बताई. स्पीकिंग पार्ट 3 के लिए क्या क्या चीज़ें वी हैव टू कीप इन माइंड. वन थिंग आई हैव टोल्ड, डिफरेंट फ्रेजेस टू बी यूज्ड, है ना, एज पर द क्वेश्चन. एज पर द क्वेश्चन एज इन अगर आपसे आपका ओपिनियन पूछा जा रहा है तो यू आर सपोज टू स्टार्ट दैट वे, है ना. इफ इट्स जस्ट कंपैरिजन, यू आर सपोज टू स्टार्ट दैट वे ओनली, राइट. सो फ्रेजेस टू बी यूज्ड इन इट. उसके बाद पैराफ्रेजिंग आई हैव टोल्ड कि पैराफ्रेजिंग बहुत ज़रूरी है स्पीकिंग पार्ट 3 में, हर पार्ट में, एंड स्पीकिंग पार्ट 3 में भी बहुत ज़रूरी है, राइट. व्हाट एल्स आई हैव टोल्ड, यू आर सपोज टू आंसर इन 4 to 5 सेंटेंसेस, राइट. एंड उसके अलावा व्हाट आई हैव टोल्ड कि जो भी आप आइडियाज़ देते हो उन आइडियाज़ को प्रॉपरली रीज़न दो एंड उससे रिलेटेड ट्राई टू ऐड एन एग्जाम्पल. एन एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या बताया, दैट शुड बी यूनिवर्सल एग्जाम्पल, दैट शुड नॉट बी पर्सनल एग्जाम्पल, राइट. तो ये सारी चीज़ें बी केयरफुल एंड क्वेश्चन को ध्यान से सुना करो व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड, ठीक है. अब अगर क्वेश्चन है हाउ शुड पीपल सेलिब्रेट देयर बर्थडे, स्टूडेंट्स ध्यान से नहीं सुनते. लेट मी जस्ट एक्सप्लेन क्या मिस्टेक करते हो आप लोग. हाउ शुड पीपल सेलिब्रेट देयर बर्थडे इफ दिस क्वेश्चन इज देयर. अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दीज डेज पीपल सेलिब्रेट देयर बर्थडे बाय throwing a party. There are many people who like spending time with their family members, but most of them they like spending time with their friends and they go out and have fun by going to the clubs and pubs and all, है ना, right. लेकिन मैंने क्या पूछा,
मैंने ये थोड़ी पूछा हाउ डू पीपल सेलिब्रेट देयर बर्थडे, मैंने पूछा हाउ शुड पीपल सेलिब्रेट देयर बर्थडे, राइट। आपने आंसर दे दिया किसका, हाउ डू पीपल सेलिब्रेट देयर बर्थडे, जबकि मेरा क्वेश्चन था हाउ शुड पीपल सेलिब्रेट देयर बर्थडे। तो इसमें तो आपको अपना ओपिनियन देना है कि आपके ओपिनियन में हाउ शुड पीपल सेलिब्रेट, आपको कौन सा अच्छा वे आउट लगता है, व्हाट यू बिलीव कि कौन सा बेस्ट तरीका है बर्थडे सेलिब्रेट करने का, राइट। वेयर एज आप किसी और क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, यू आर आंसरिंग लोग बर्थडे कैसे मनाते हैं, मैंने पूछा लोगों को बर्थडे कैसे मनाना चाहिए। तो ये चीजें बहुत केयरफुली सुना करो, क्योंकि जब आप लोग नहीं सुनते हो यू एंड अप गिविंग रॉन्ग आंसर्स, एंड जब आप गलत आंसर दोगे तो ऑफकोर्स बैंड स्कोर उसका डिडक्ट होगा। आई होप इट्स क्लियर टू ईच वन ऑफ यू। यस ईशा, यस उमार, यस राम, है ना, कि क्या क्या गलती होती है, क्वेश्चन को बहुत केयरफुली सुना करो। व्हाट हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड हियर, है ना, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है उसको ध्यान से सुनो, उसी फॉर्म में हमें आंसर देना चाहिए। और ये वाली मिस्टेक ज्यादातर पार्ट 3 में ही होती है। वाई, बिकॉज पार्ट 3 में जनरली क्वेश्चन लेंथी होते हैं, राइट, लेंथी क्वेश्चन होते हैं एंड यू आर अनेबल टू पे अटेंशन ऑन टू देम। आप क्वेश्चन के 3-4 वर्ड्स को ही सुनते हो, यू डू नॉट पे अटेंशन ऑन टू द कंप्लीट सेंटेंस, एंड व्हेन यू डू नॉट पे अटेंशन ऑन टू द कंप्लीट सेंटेंस, व्हेन यू डू नॉट लिसन टू इट केयरफुली, यू एंड अप गिविंग रॉन्ग आंसर्स, ठीक है। सो प्लीज स्टॉप डूइंग दिस थिंग। सबसे मेन चीज, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनो, उसको समझो एंड स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चन, ठीक है गाइस। So I hope it's clear to each one of you. Yeah. So if you are interested to join Unacademy and my complete courses there, wherein in detail everything is discussed for speaking, writing, reading, listening and grammar, you should use this code SHAMAARORA10. ठीक है. If you use this code, you get 10% discount on the plus subscription and you'll be able to attend classes of all the educators there, any of the educators, ठीक है. There are around 10 educators who have been giving classes at Unacademy in IELTS category, and you may attend sessions of each and every educator, and even the recordings are available. So as per your convenience, you can listen to the recordings. Yeah guys, ठीक है. So anything else to be asked about speaking part 3, let me know please, if you want to ask anything specifically about speaking part 3. Isha, you need to discuss anything? Umar, Isha, Ram. Okay, okay, Isha. Alright guys, okay. Ram is asking how to know my seat number before examination. Okay Ram, your exam is on 23rd October. Speaking का अच्छा अभी आज क्या है? It's 21st. You haven't got any speaking exam speaking timing, venue and all, Ram? Haven't you got it yet? So जो LRW है ना, उसके लिए तो you have to get take the same confirmation, जो आपको confirmation receive हुआ होगा ना. Speaking is on 5th, okay. तो how to know my seat number? What are you asking, Ram? There's nothing as such seat number. ऐसा कुछ नहीं होता. You just आपको confirmation speaking का भी मिल गया होगा. You have to take that along, वो confirmation letter, ठीक है. And LRW का भी confirmation मिला होगा. You have to take that along, ठीक है राम. सो सीट वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें. ओके, या एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम राम. ऑल द वेरी बेस्ट. गिव योर बेस्ट. चलो, ऑल राइट गाइज, ओके, बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन.